विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाले त के कुरा जनाएको छ भनेदेखि चाहिँ 1,46,000 मान्छेको इन्डाइरेक्ट हत्या पनि इजरायलले गरिसकेको छ। यति धेरै मान्छेको हत्या गर्नको लागि जो इजरायल उत्रेको छ त्यसको दण्ड उसलाई दिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनसमुदायको माग छ। प्यालेस्टाइनी जनताप्रतिको एकताबद्धताको लागि हो। यो आवाज प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्तिको लागि हो। यो आवाज हामीले उठाएका यो आन्दोलन प्यालेस्टाइनी भूमिको स्वतन्त्रताको लागि हो। त्यसैले गर्दाखेरि म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेपालको तर्फबाट प्यालेस्टाइनी जनताप्रति एकबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो प्यालेस्टाइनी भूमिमा प्यालेस्टाइनी जनतामाथि गरिएको अमानवीय अत्याचारको विरुद्धमा म घोर इजरायली सरकारको इजरायली नेतृत्वको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। त्यहाँका शासकहरूले न्याय नदिँदाखेरि पानीले बाटो नपाउँदा जसरी बाँध फुटाउँछ कुलो फुटाउँछ, न्याय माग्दाखेरि न्याय नदिने शासक अन्यायमा परेका जनताले पानीले बाटो नपाएपछि बाँध फुटाए जस्तै हतियारको सहारा लिन पुग्छ। इस वक्त जो कर रहा है गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ वो जेनोसाइड है। उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे जेनोसाइड माना है। अभी 2 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो मिलिट्री के जनरल थे योआव गलांत उनके लिए अरेस्ट वारंट दिए हैं। इसका मतलब दुनिया के 124 देशों में वो जा नहीं सकते, उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं 1 साल से 13 महीने से गाजा में कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले से 75 साल से ज़्यादा से वो जो उन्होंने पूरी फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, जो वो साम्राज्यवाद है, जो वो नस्लवाद है, वो हम सब जानते हैं क्योंकि हम खुद ग्लोबल साउथ से हैं। हम दक्षिण हैं इस दुनिया के। हमने देखा है गरीबी, हमने देखा है साम्राज्यवाद क्या होता है, हमने नस्ल भेद देखा है, हमने धर्म के नाम पे हिंसा देखी है। इसलिए हम समझते हैं कि जो पैलेस्टाइन में जो भाई बहनों के साथ अभी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो चुका है और इसलिए हम उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उनके साथ हमारा खड़े होना ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो आज़ाद नहीं होते हम में से कोई आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ठिक बेठिकमा त प्रश्न छ कुरा हैन। यत्रो मान्छेको हत्या भइरहेछ, यत्रो मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने संसारको गएको 20 वर्षको युद्धहरूमा जति महिला र केटाकेटीहरूको मृत्यु भयो त्यति नै इजरायलको यो गाजाको आक्रमणमा मृत्यु भइसकेको छ। के यो ठिक हो? त्यसपछि 85% स्कुलहरू, विद्यालयहरू, अस्पतालहरू ध्वस्त भएका छन्। मानव अधिकारको हनन भएको छ। के कुरा यो कुरा ठिक हो? यदि यो ठिक होइन, यो बेठिक हो भने यो सरकारले, नेपालको सरकारले यो बेठिक हो भन्न किन सक्दैन? We are from Everest region, so let's start with introduction. Well, I'm Amar Jan. I'm a professor and a historian of colonial India, and I'm also a member of the People's Party in Pakistan, a left-wing party, and I'm an activist who works on human rights and social justice. Okay, nice to see you here in this movement here. So, could you tell me something about the movement and what is going on here? This is a protest in solidarity with the people of Gaza, with the people of Palestine. Israel is committing a genocide, it's a televised genocide. The whole world can see, but it is committing this crime because the US, the sole superpower, is backing Israel's crimes, it's funding it, it's arming it, and it's vetoing any resolution for ceasefire in the UN Security Council. So we are seeing the ugliest face of imperialism. And imperialism today has become a death machine. It's creating death zones around the world. It's a threat to humanity. And Gaza represents the worst of imperialism, but
also represents the best of the human will to resist imperialism. And today, standing with Gaza means standing with humanity, standing with justice, standing against imperialism. So I think this is what the comrades in Nepal are showing. They're showing the entire world that the people of Nepal are with the people of Gaza, which means the people of Nepal are upholding the values of humanity and dignity.